Hi, this video is about anxiety disorders. We'll talk about anxiety and its types, and also we'll see कि DSM4tr में anxiety disorders की कौन कौन सी types हैं और DSM5 में क्या changes आए हैं. So generally मैंने बहुत मतलब books में देखा है कि मतलब definitions वगैरह दी होती है anxiety की, but when it comes to the difference between DSM4 and DSM5, so उसमें इतना clearly explain नहीं किया होता. So I hope this would be clear by the end of this video. So first let's start with definition of anxiety. What is anxiety? Anxiety is generally a very unrealistic, irrational fears or anxieties that cause significant distress or impairment in functioning. So anxiety is a like general feeling of apprehension, worry, nervousness about possible future dangers. So now everybody at some point or the other in their lives experience some kind of worry, fears or apprehension. बट हम इसको डिसऑर्डर कब कहेंगे जब एक तो ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा हो, बहुत लंबे टाइम में बहुत परसिस्टेंस से हो रहा हो. इफ़ यू हैव हर्ड माई फर्स्ट डेफिनेशन, आई सेड दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग. एंग्जाइटी थोड़ी बहुत सबको होगी, बट जब अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही हो और एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हो और बहुत इम्पेयरमेंट्स क्रिएट कर रही हो कि वो जो नॉर्मल लाइफ उसकी थोड़ी बहुत डिसरप्ट हो रही हो उस बहुत ज़्यादा वरी की वजह से, सो वी कैन से कि दैट पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर. So talking about its types, according to DSM4tr, there are 5 types of anxiety disorders. Generalized anxiety disorder, post-traumatic stress disorder, obsessive compulsive disorder, panic disorder, and phobia. So first is generalized anxiety disorder. In this, a person has a feeling of dread or impending doom. In this, a person has a tendency to worry about situations that are not really, that much of a bigger problem. Generalized anxiety disorder is basically जब एक इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. हम कई बार लोग देखते हैं जो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हम बोलते टेंशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं. सो दिस इज़ दैट डिसऑर्डर. और ये हम डिसऑर्डर में तब क्लासीफाई करेंगे तब या फिर तब डायग्नोस करेंगे जब ये एटलीस्ट 6 मंथ से प्रेजेंट है किसी की लाइफ में. ये नहीं है कि उसको मतलब थोड़े दिन से थोड़ी एंग्जाइटी हो थोड़ी घबराहट हो रही है तो हम उसको बोल देंगे कि इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. ये कम से कम लाइक 6 मंथ्स तक प्रेजेंट होना चाहिए. एंड इन दिस द इंडिविजुअल फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द वरी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द physical symptoms of generalized anxiety disorder, that would be restlessness, being easily fatigued, difficulty concentrating, irritability, muscle tension, and sleep disturbances. Next, let's see what the panic disorder is. So panic attack is basically a very abrupt surge of anxiety and very, very intense discomfort that reaches a peak within minutes. Some of the physical symptoms can be palpitations, pounding heart, accelerated heart rate, sweating, trembling, shaking, shortness of breath, feeling of choking, chest pain, nausea, abdominal distress, feeling dizzy. There could be numbness or tingling sensations in the body. There could be derealization, which is feelings of unreality, or depersonalization, which is like feeling detached from one's own body. There is like fear of losing control, there is fear of dying. और एक और चीज़ क्या होती है जनरली पैनिक अटैक्स के बाद कि जिस इंसान को पैनिक अटैक आता है वो बाद में बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है कि मुझे दूसरा पैनिक अटैक ना आए. तो इस फियर में वो बस ये सोचता रहता है कि मैं कैसे इसको अवॉइड करूँ कि ये मुझे नहीं आए दोबारा. सो दैट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय अ पैनिक अटैक. जनरली ये बुक्स में मेंशन नहीं होता है, बट यू कैन ऐड दिस पॉइंट टू गेट like if you are preparing for some exam, then you can definitely catch the attention of the teacher. So panic attacks are of 3 types. Situation bound panic attacks. In this, the person confronts fear objects. So कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन है जिससे वो बहुत इंसान डरता है, अगर वही चीज़ उसके सामने आ जाए, so the person will have a panic attack. The another is situation cued panic attack. It occurs in the anticipation of feared objects. So let's say I am very fearful of any particular situation or a thing, और मैं
उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे सिर्फ वो सोच के पैनिक अटैक आ गया. सो दैट वुड बी सिचुएशन क्यूड पैनिक अटैक. एंड देन देर इज़ अनक्यूड पैनिक अटैक विच हैपन्स जस्ट अनएक्सपेक्टेडली, देर इज़ नो रीज़न. और इसका रीज़न कहीं पे भी ज़्यादा मेंशन नहीं है, ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है. सो दीज आर 3 टाइप्स. Next are phobias. So, phobias are persistent and irrational fear of some object or a situation which has little or no danger for a person. So, why do we call it irrational? Because let's say आपके साथ बचपन में कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि मान लो आपको स्नेक से बहुत डर लगने लगा. आपने किसी स्नेक को कन्फ्रंट किया और एक ऐसा कुछ हो गया कि आपको उससे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा. आप बड़े हो गए, वो द स्नेक इज़ नॉट देयर एनी मोर in your life. That snake that caused you anxiety or fear, that is not there anymore, but you are still feeling very very anxious whenever you think about a snake or whenever you confront any snake. So that is called a phobia. So here we are talking about DSM4tr. So according to DSM4tr, there are further 3 categories of phobias. There is social phobia or social anxiety disorder, there is specific phobia, and there is agoraphobia. So, social phobia, let's first talk about this. So, social phobia is marked fear or anxiety about one or more social situations in which the individual is exposed to possible scrutiny by others. So, the hallmark of social phobia is negative evaluation from others. जो एक core belief system होता है, जिसको भी social anxiety disorder है, वो होता है कि वो बहुत ज़्यादा डरता है दूसरों के negative evaluation से कि what if somebody says negative things about me, what if somebody thinks I'm ugly or I speak in a weird way, or whatever the cause is. Basically the negative evaluation is feared. The example could be having a conversation, meeting unfamiliar people, being observed while eating or drinking, or performing activities in front of other people. ये सब चीज़ में इंसान को घबराहट होती है. The person feels very very anxious specifically in these situations. The individual fears that he or she will act in a way or show anxiety symptoms that will be negatively evaluated. एक और चीज़ होती है सोशल फोबिया में, इंसान को सोशल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ये हमने जान लिया. और जब वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो उसके आ रहे होते हैं, ही और शी में बी ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, तो वो इंसान डरता है कि दूसरा इंसान, मतलब दूसरे जो लोग हैं, कहीं मेरे ये सिम्टम्स ना देख लें. सो द पर्सन इज़ वेरी वेरी फियरफुल. और इसका भी डायग्नोसिस तभी होगा जब अगर ये 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा प्रेजेंट है, और ये भी लाइक इट कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन पर्सनस लाइफ. दिस पॉइंट will be applicable to all the disorders, that this causes a significant distress and impairment in a person's life. And also the person actively avoid those social situations in which he Agoraphobia feels is fear of unfamiliar so the places. anxiety could be using public transportation, being in open places, being in enclosed spaces, standing in a line, being outside of home alone. So generally people with agoraphobia do not leave their homes, or even or if they do it with a trusted companion. It's very hard for them to go to a very unfamiliar place alone. Sometimes there is a confusion between panic attacks and agoraphobia. The distinction is that agoraphobia is particular to unfamiliar places, and a panic attack can happen anywhere. Also, in agoraphobia, उनको इतना ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी हो जाती है उन सिचुएशंस में कि उनको पैनिक अटैक भी आ सकता है. द इंडिविजुअल माइट फियर or avoid these situations because of thoughts that they might not be able to escape from that situation, or if they get a panic attack, there won't be any help available. So these kind of thoughts are there in a person with agoraphobia. Now let's talk about specific phobia. Specific phobia is, as the name suggests, is fear from any specific object or a situation. Generally DSM5 में ये कुछ classifications दी हुई हैं. There could be animal phobia such as snakes, spiders, dogs, insects or birds. There could be phobia from natural environment such as storms, height, water. There could be phobia from blood injection injury, seeing blood or an injury, receiving an injection, seeing a person in a wheelchair. That could also
create some distress. There could be situational phobia, for example, using public transportation, tunnels, bridges, elevators, flying, driving in closed spaces. Or there could be other, for example, choking, vomiting, space phobia, uh, like fear of falling down if away from walls or other support. So these are all these all come under specific phobias. Then there is OCD or obsessive compulsive disorder. In OCD, basically, there are two words if you see, obsessive and compulsive. So, obsessions are recurrent thoughts, and compulsions are your actions that you have to take because of those compulsive thoughts. So, in people with OCD, generally उनको कुछ थॉट्स आते रहते हैं बार बार, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव, और उन्हीं थॉट्स की वजह से उनको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं जो कि उनके लिए बहुत डिस्ट्रेसफुल हो जाता है एक नॉर्मल लाइफ जीना, बिकॉज वो थॉट्स उनको बार बार कुछ करने को बोलते हैं. देयर कुड बी रेकरेंट and persistent thoughts, urges, or images that are experienced at some time during the disturbance, intrusive or unwanted thoughts, and the individual attempts to ignore or suppress such thoughts, urges, or images, or to neutralize them with some other thought or action. And there are repetitive behaviors such as washing hands again and again, ordering things, checking things. There could also be actions on a mental level, such as praying, counting something again and again. Yeah, these are all the symptoms of OCD. Then last, there is PTSD, which is post-traumatic stress disorder. This happens when a person experiences a really traumatic event, and after that event has passed, the person still feels very anxious in generally in daily life. So symptoms may include recurrent memories about that particular event, despite attempts to suppress it, feeling numb, flashbacks, avoiding situation that are similar to that traumatic situation, depressed mood, hypervigilance. These are all symptoms of PTSD. Now let's talk about DSM-5. We have already given the explanations of everything. Now it's just that DSM-5 में कुछ changes आए हैं. So what happened in DSM-5 is that OCD or PTSD are no more part of anxiety disorders. They have their own separate independent categories. And so the 5 types of anxiety disorders according to DSM-5 are panic disorder, generalized anxiety disorder, and जो हमने पहले फोबियाज में 3 कैटेगरीज पढ़ी थी कि फोबियाज के अंडर ये 3 चीज़ें आती हैं, उनको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे दी. सो इन शॉर्ट, DSM-5 में 5 तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर स्पेसिफिक फोबिया, social phobia, agoraphobia, panic disorder, and generalized anxiety disorder. And we have already talked about their explanations. So thank you for watching the video.